और उसके बाद जो है 11 बजे देश के सामने बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये अभी तक का ऐसा है। और उसके बाद शाम को जहां तक शेड्यूल की बात है 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगी, उसमें दोनों वित्त राज्य मंत्री वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। और 4 बजे जो है रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बजट में जो जो प्रावधान, जो जो चीजें सामने आएंगी देश के, उसके बारे में वो जनता को बताएंगे। तो ये शेड्यूल रहने वाला है। तो गहमा गहमी तो है ही, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1 फरवरी का बजट पेश दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहता है और देशवासियों के साथ ही सभी को इंतजार के इस बजट में क्या नया उनके लिए। प्रीति, बिल्कुल, और एक नजर इस बात पर भी रहेगी क्योंकि 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बना। 2 घंटा 41 मिनट उन्होंने बजट भाषण दिया था। हालांकि 2022 की जब बात करें तो महज 1 घंटे 31 मिनट जो बजट का भाषण रहा वो रहा था। तो कहीं ना कहीं समय पर भी नजर रहेगी, क्या डिटेल्स होगी। सीधी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, दोनों वित्त राज्य मंत्री आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री और वहां बजट को लेकर जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। आपको बता दें ये प्रक्रिया, ये परंपरा है जो बजट से पहले निभाई जाती है। और अब 9 बज चुके हैं, 11 बजे बजट पेश होना है। सत्र शुरू होते ही, कार्रवाई शुरू होते ही बजट सत्र की लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और उसके पहले अब राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और वित्त मंत्री के हाथ में ये पहली झलक आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें बजट की हैं। बहरहाल अब ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये लैपटॉप है या फिर ये बही खाते का रूप होगा, क्योंकि अशोक स्तंभ के साथ मैरून कलर का ये जो लिफाफा है बही खाते का रूप भी हो सकता है, ये टैबलेट भी हो सकता है और यही देश का आम बजट होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की, जो कि वित्त मंत्रालय से निकलकर अपने दोनों जो सहयोगी वित्त राज्य मंत्री हैं उनके साथ वो राष्ट्रपति भवन का रुख कर रही हैं। यहां से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुमति लेकर, जो कि परंपरा है, उसके बाद में वो सीधे तौर पर बिल्कुल पराक्रम में काफी दिलचस्प तस्वीरें होंगी जो हम बता भी रहे हैं। राष्ट्रपति, हमें एक महिला राष्ट्रपति हमारे देश की है, महिला वित्त मंत्री, वो काफी दिलचस्प। 0015 निर्मला जी यहाँ से निकल रही है सामने से। निर्मला जी को बयां करती है तस्वीरें होंगी। और जैसा आप बता रहे थे कि बही खाता होगा या लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, ये तीसरी बार है जब पेपरलेस बजट पेश होगा। इससे पहले 2 बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है और अब तीसरी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेपरलेस बजट पेश करेंगी। पूरी तरह से जो संसदीय कार्रवाई है उसको लगातार पेपरलेस करने की जो कोशिशें हैं वो चलती रही हैं और इसमें कामयाबी भी मिली है और अब तीसरी बार पेपरलेस बजट आज हम पेश होगा देखेंगे। ठीक है अखिलेश, वित्त मंत्री निकल चुकी है वित्त मंत्रालय से, सीधा राष्ट्रपति भवन का रुख कर रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल वित्त मंत्री निकल चुके हैं जी। देखिए अभी वो निकली है बिल्कुल अपने सही समय से, वो 9 बजे के एकदम सही समय पे निकली यहाँ से और उसके बाद अभी वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रही है। आप देख सकती हैं तस्वीरें, उनका काफिला पूरी तरह जा रहा है और राष्ट्रपति भवन में जाएंगे। एक औपचारिक मुलाकात होती है, औपचारिक तरीके से उन्होंने अपना जो टैबलेट है वो टैबलेट दिखाया, जैसा अभी हम सारे लोगों को उसी टैबलेट में वो कह सकते हैं कि किस तरह से खजाने का उपयोग करेगी इस साल, वो उसी टैबलेट में सारी बातें दर्ज है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के लिए भी यह पहला बजट है उनके कार्यकाल का और इस पहले बजट में उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कल राष्ट्र के जो संबोधन किया दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को, उन्होंने बार बार मेरी सरकार क्या करेगी, मेरी सरकार ने क्या किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने पिछले 9 सालों का तो लेखा जोखा किया है, लेकिन इस साल क्या होगा और इस साल के बारे में यह माना जा रहा है कि अगले 25 साल का जो अमृत काल है उस अमृत काल का भी एक लेखा जोखा, उसकी भी एक दिशा होगी। तो निश्चित तौर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी बहुत ही कह सकते हैं कि अविस्मरणीय क्षण होगा कि उनके आने के बाद जो 25 साल का अमृत काल शुरू हुआ है और निर्मला जी जो कई बजट पेश कर चुकी है और उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय है कि किस तरीके से समाज के विभिन्न तबकों में जो इच्छाएं जगी है, जो महत्वाकांक्षाएं बनी है और जो रोजगार
सरकार के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं, लोगों की आशाएं बनी है, उसको कैसे पूरा करती है और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भारत अपना और ज्यादा महत्वाकांक्षी कदम उठाने वाला है। उसके अलावा G20 का जो सितंबर में शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसके एडिशन में जो बहुत सारी बैठकें हो रही है, दुनिया के G20 के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और विभिन्न मसलों पर विचार कर रहे हैं। इन सारे बातों की भी एक झलक पराक्रम आपको मिलेगी। और जो अभी निर्मला जी गई है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इजाजत लेगी कि मैं अब जा रही हूं बजट पेश करने, और उस इजाजत के बाद ही वो जाएगी संसद भवन परिसर में। संसद भवन परिसर में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें वो कहेंगी कि हाँ मैं बजट पेश करने जा रही हूं। क्योंकि देखिए ये जो बजट है भले ही वित्त मंत्री पेश करती हो, लेकिन ये सरकार का बजट होता है और भारत सरकार के बजट के लिए सारे विभागों से 6 महीना से ये प्रक्रिया शुरू होती है। सारे विभागों से मांगे मानी जाती है कि आपकी क्या क्या मांगे हैं और आप किस तरीके से राजस्व में भी कह सकते हैं कि योगदान कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों का एक जो वित्तीय जो एक महत्वाकांक्षा होती है, उस वित्तीय महत्वाकांक्षा की एक झलक होती है। और निश्चित तौर पर चुनौती ये होती है कि न सिर्फ हम कितना खर्च करेंगे बल्कि हम कितना आमदनी करेंगे, क्योंकि जो अभी जो पूरी दुनिया की स्थिति है और देश की स्थिति है कि पैसा सरकार के हाथ में लगातार आपके पास हम आते रहेंगे। और ये तस्वीरें आप संसद टीवी पर लगातार देख रहे हैं, कुछ पलों पहले की तस्वीरें हैं। अब राष्ट्रपति भवन का रुख कर चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वहां राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल, एक थोड़ा सा हम ये भी समझना चाहेंगे, बात करें प्रीति, लेकिन उसके पहले सूरज मोहन झा संसद भवन परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, समझना चाहेंगे आपसे कि अब जब चूंकि अब कुछ समय बाकी रहा है, अभी 9 बजे लगभग बज चुके हैं, अभी संसद भवन में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां, क्या कोशिशें हैं? पराक्रम, अगर हम कहें तो संसद भवन प्रांगण में बजट की पूरी तरह से तैयारियां जो है वो हो चुके हैं। लगभग तमाम गेट जो है, चाहे वो गेट नंबर 4 हो, प्रधानमंत्री का गेट हो, चाहे गेट नंबर 1 हो, सभी को फूल मालाओं से सजाया गया है। और गेट नंबर 1 पर खास तैयारी की जा रही है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उनके साथ उनके सहयोगी राज्य मंत्री जो है और उनके अधिकारीगण वहीं से आएंगे और वो बजट की कॉपी उनके हाथ में होगी और वहां पर वो मीडिया के लिए फोटो करेंगे, जिसके जरिए से पूरा देश जो है वो बजट की एक झलक बाहरी तौर पर देख पाएगा। उसके बाद वो लोग संसद भवन में ही जाएंगे, जहां पर 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहां पर कैबिनेट इस बजट को सहमति दे देगा, इसे अप्रूव कर देगा। उसके बाद 11 बजे लोकसभा में निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। जहां तक संसद भवन में तैयारियों की बात है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कुछ ऐसे दस्तावेज जो बजट के अलावा जो होते हैं, जिसमें जो सांसदों को बांटने के लिए होते हैं या तमाम जो मीडिया या अन्य लोगों के लिए होते हैं, वो अब रखने शुरू हो गए हैं, उसकी तैयारियां हो गई हैं। और पराक्रम, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने भी बजट को लेकर का संकेत दिए थे जब सत्र की शुरुआत में उन्होंने मीडिया से, इसी जहां पे मैं खड़ा हूं इसी जगह पे उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि इस बार का जो बजट है वो लोक कल्याणकारी बजट होगा, आम जनता का बजट होगा। इससे पहले हमने 26 जनवरी से पहले जो राष्ट्रपति महोदया का संबोधन देश के नाम था, उसमें भी सुना था कि 2023 तक जारी रहेगा। 82 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो लोक कल्याणकारी रहेगा। चूंकि वैश्विक मंदी है, उसकी आहट को देखते हुए भारत में महंगाई और बेरोजगारी की जो दर है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब स्थिति सुधर रही है। उसके अलावा भी जो तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये तमाम इस बार के बजट में हमें देखने को मिलेंगे और तैयारी पूरी तरह से संसद भवन प्रांगण में हो चुका है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ एक हलचल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। पराक्रम। सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है। लेकिन ये 5वां बजट है निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर, और मैं अब स्टूडियो में जगह ले चुका हूं पराक्रम के प्रतिबिंब शर्मा। माना जा रहा है कि 2023-24 के साथ साथ ये अमृतकाल यानी कि 25 बरस का भी ये कहीं ना कहीं रोड मैप होगा ये बजट। सूरज, हम बता दें कि ये तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण थोड़ी देर पूर्व वित्त मंत्रालय में थी, अब वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गई हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगी और उनसे बजट पेश करने की अनुमति प्राप्त करेंगी। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। और हम बता दें कि राष्ट्रपति भवन के लिए
निकल चुकी हैं। कुछ क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, उनसे बजट पेश करने की अनुमति लेने वाली हैं। हम बता दें कि ये निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के तौर पर 5वां वित्त बजट है। कुछ ही देर में वो बजट पेश करेंगी, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कैबिनेट की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तकरीबन 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में वित्त मंत्री को बजट पेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कुछ देर पूर्व की ये तस्वीरें वित्त मंत्रालय से निकलती हुई राष्ट्रपति भवन के लिए जाती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भविष्य का बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि अमृतकाल लग चुका है। अगले 25 बरस में भारत कैसा होगा, क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कायम की जा सकेगी, उसका आधार भी संभवतः इस बार का ये बजट रखने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बजट। बिल्कुल प्रतिबिंब, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता, और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास, बजट सत्र का जो दूसरा दिन, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो आज 5वां बजट जो है वो पेश करेंगी। सभी की निगाहें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं, आम जनता की, खास लोगों की, इंडस्ट्री की, रोजगार पाने वाले लोगों की और छात्रों की भी, क्योंकि जैसा कि प्रतिबिंब, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो अच्छे अगले 25 सालों का रोड मैप है उसकी झलक जो है वो दिखाई देगी इस बजट में। और बजट को लेकर कहा जा रहा है कि चूंकि ये इस सरकार का पूर्णकालिक बजट है तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखना होगा कि उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये थोड़ी सी देर पहले की है, जब वित्त मंत्री निकली हैं और पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति भवन। फिलहाल आज दिन भर संसद टीवी पर बजट सत्र का जो विशेष प्रसारण है वो लगातार जारी है। आपको बजट सत्र से जुड़ी पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। अजय शंकर जी, दीपशिखा शिकरवाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। मोनिका हलान वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ने वाली हैं, और अमन जी हमारे साथ जो हैं लगातार बने हुए हैं। अमन अग्रवाल जी, देख रहे हैं सुबह से किस तरीके की यात्रा जारी है इस वित्त बजट को लेकर। और वित्त बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मोदी 2.0 सरकार का माना जा रहा है आखिरी पूर्णकालिक बजट होने वाला है। एक तो 25 बरस का रोड मैप, क्या अमृतकाल का वो होने वाला है, और दूसरा माना यह जाता है जब चुनाव से आखिरी पूर्णकालिक बजट होता है तो वो लोक लुभावना होता है। क्या संभावना लग रही है? मेरे विचार में कि ये जो बजट इस बार आने की उम्मीद है, जैसे पहले बजट आए हैं, चाहे वो मोदी 1.0 के खत्म होने पे आया हो या पहले आया हो, वो लोक लुभावना तो नहीं, इलेक्शन बजट जिसे कहा जाता है वैसा नहीं होगा। जो रिफॉर्म प्रोसेस इस सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट करना, उसके मद्देनजर रखते हुए जो प्रगति के रास्ते पे चलने वाला, हिंदुस्तान को आगे लेके चलने वाला बजट है वो जरूर रहेगा। अगले साल के प्रोजेक्शंस भी रहेंगे, और अगले 25 साल के लिए हिंदुस्तान का एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है दिखाता हुआ बजट भी हमें देखने को मिलेगा। इसमें कुछ चीजें जरूर मेरे विचार में देखने को मिलेंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स के ऊपर, रोजगार के ऊपर जी, इस बिंदु पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं हमें। अखिलेश, वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन क्या पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद क्या पूरा ग्राफ है, क्या पूरा कार्यक्रम है वित्त मंत्री का? जी अखिलेश। देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब, निर्मला जी अभी यहाँ निकली और अभी राष्ट्रपति भवन में वो पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, और अभी जहां खड़ा हूं मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा देश का जो पावर सेंटर है, ये पावर सेंटर है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति भवन से सामने देखेंगी तो आप देखिए, एक तरफ उनकी बाईं तरफ ये नॉर्थ ब्लॉक है जो दिखा रहा हूं मैं, ये नॉर्थ ब्लॉक जिसमें कि वित्त मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय का कार्यालय है। उसके दाहिनी तरफ अगर
मैं दिखाऊं तो दाहिनी तरफ है विदेश मंत्रालय, उसके बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय है और उसके बाद डिफेंस मंत्रालय का कार्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके बीच में बैठी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके पास गई है। तो ये पूरे पावर सेंटर का क्या दृष्टिकोण है इस साल पूरे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में बल्कि वो क्या ग्राफ है जिसके कारण, जिसके तरीके से पूरे देश की जो रोजगार की स्थिति को और दुरुस्त किया जाए, पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी है उस आर्थिक मंदी को दूर करने में भारत G20 के प्रेसिडेंट के रूप में क्या योगदान कर सकता है, उसका भी रिफ्लेक्शन इस बजट में निकलेगा। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक वो संक्षिप्त तौर पे अपनी बातें बताती है, लेकिन चूंकि बजट जो है, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार का दस्तावेज होता है और उसको कैबिनेट की संस्तुति मिलने के बाद अभी 10 बजे के करीब 10:10 पे कैबिनेट की मीटिंग होगी संसद भवन परिसर में, और उसके बाद लोकसभा में जब पेश होगा तो एक के बाद एक चीजें अनफोल्ड होती जा रही है। ये बजट दो तरीके से काम करेगा, एक तो तात्कालिक जो समस्याएं हैं देश की, और उसके बाद दीर्घकालिक जो मामले हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, आर्थिक संरचना से, आधारभूत संरचना से, स्मॉल मीडियम स्केल और उसके अलावा बिग इंडस्ट्री के भी मजबूती के लिए, इन सारे चीजों। अखिलेश सुमन, आपका रुख करेंगे, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन संसद भवन परिसर से सूरज मोहन झा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूरज, वहां पर किस तरह की सरगर्मियां हैं? आज बजट सत्र का जो है दूसरा दिन है, पेश होगा देश का आम बजट, उम्मीदों का बजट, आशाओं का बजट, आकांक्षाओं का बजट, किस तरह की सरगर्मियां वहां पर? अमृता, संसद भवन परिसर में अब जो हलचल है वो काफी तेज हो चुके हैं और यहाँ पर मीडिया हो चाहे सांसद हो, उन लोगों का आना शुरू हो गया है। चूंकि 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होनी है। इस समय अमृता मेरे साथ बात करने के लिए रतनलाल कटारिया जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हम इस बजट के बारे में बात करते हैं। रतनलाल कटारिया जी, इस बार के बजट की क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? प्रधानमंत्री ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का जो बजट होगा वो जन कल्याणकारी बजट होगा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले 8 वर्षों की लगातार जो है कल्याणकारी योजनाओं की ओर बढ़ते हुए ये बजट भी बहुत ही जबरदस्त कल्याणकारी होगा और हमें पूरी आशा है कि जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री सीतारमन जी एक बहुत बेहतरीन बजट जो है इस देश की जनता के सामने पेश करेगी, जिसमें रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा और जिस तरह से भारत प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसको और 4 चांद लगेंगे और विश्व के अंदर भारत की जो पताका आज फहरा रही है उसमें और मदद मिलेगी। G20 की मेजबानी भारत को मिली है और इस बार के बजट में उसका भी असर देखने को मिलेगा। आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे हैं, तो अगर हम कहें समाज के वंचित वर्ग, जो शोषित वर्ग हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी इस बजट से? भारतवर्ष के अंदर G20 हो रहा है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अभी जो पीछे बाली में हुआ था उस सम्मेलन को भी अंतिम क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंटरवेंशन से सफल बनाया गया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने बाली में कहा था कि इट इज नॉट ए टाइम ऑफ वॉर, इट इज ए टाइम ऑफ पीस, और तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था कि वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। सूरज, आप वहां पर लगातार बने रहिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शंकर जी, अगर बात करें इस बजट की, जैसे कि यहाँ पर मेरे सहयोगी ने भी पूछा, माननीय सांसद से, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत में ही सम्मेलन होने वाला है, तो क्या G20 सम्मेलन और अध्यक्षता भी रिफ्लेक्ट करेगा इस बार के बजट पे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बजट में मुझे उम्मीद है इसका संकेत तो जरूर मिलेगा जी। और जो कल आर्थिक सर्वे में जो बात सामने आई है कि विश्व में जो आर्थिक संकट पिछले वर्ष में रहा है विकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में, पड़ोसी राष्ट्रों में,
तो सबकी अपेक्षा भारत की स्थिति बेहतर रही जी और आज हम पहली बार हुआ है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ अमेरिका से कम रहा है और पहली बार ये है कि जो पड़ोसियों राष्ट्रों में जो जितनी कठिनाई हुई है उसके मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जी जी। और दीपशिखा सिकरवार जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दीपशिखा सिकरवार जी, हम अमूमन देखा ही जाता है पिछला बजट कैसा रहा और इस बार का बजट कैसा रहने वाला है, ये तुलना मोटे तौर पर की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो उन्होंने 9 साल का लेखा जोखा जो है उस अभिभाषण में परिलक्षित किया और उसमें कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की गई उस अभिभाषण के जरिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार सरकार और देश प्रयास कर रहा है और इसी को आगे बढ़ाने का काम इस बार का वित्त बजट भी करने वाला है। तो दीपशिखा जी से लगता है हमारा तो दीपशिखा जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम ऋचा गुप्ता जी से और मोनिका हलन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, इसी सवाल को लेके आते हैं क्योंकि जो हमारा ये सेगमेंट है 9 से 10 का प्रतिबिंब, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कल अभिभाषण दिया बजट सत्र के पहले दिन और जिन बातों का उल्लेख किया, सरकार के पिछले 2 जो कार्यकाल रहे उसका पूरा लेखा जोखा एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की जो भावना रही है सबका साथ सबका विकास के साथ 2014 में जो शुरुआत की और जो अंत्योदय तक की भावना से ओतपोत रही, क्या आगे भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस बजट में? आपसे जो समझना चाहेंगे इस बात को। जी नमस्कार से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी जो पैनलिस्ट ने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी रहेगी, जो एक एजेंडा, जो एक विजन लेके सरकार अभी चल रही थी पिछले सालों में, वी कैन एक्सपेक्ट कि उसी कंटिन्यूटी से बजट में हमें चीजें दिखाई देंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस, डिजिटल इंडिया पे एम्फेसिस, पीएलआई स्कीम्स पे, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का एम्फेसिस, और जो एक इकोनॉमी में कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, जैसे कि हमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमी से जो आशा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ कम है, स्लो है, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो रिस्क है वो अभी कंटिन्यू करेंगे, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक्सपोर्ट्स जो हमारे अभी ग्रो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इन सब चीजों पर भी बजट से एक्सपेक्टेशन है कि इन सब रिस्क, इन सब इश्यूज, इन सब चैलेंजेस को देखते हुए बजट इस साल का और आगे के सालों के लिए अपने प्लान और विजन पर फोकस करेंगे। तो कंटिन्यूटी भी रहेगी, लेकिन जो इस साल के चैलेंजेस है उन पर भी फोकस रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है बजट से। जी, हम बता दें हमारे सहयोगी नव विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। नव विक्रम, क्या माननीय सांसद वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्या कुछ माननीय सांसदों से आपकी बात भी हुई है? अगर बात हुई है तो उनकी क्या अपेक्षा है इस बार के बजट से? जी बिल्कुल, प्रतिबिंब कुछ सांसद यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि सभी की अपेक्षा है कि जो भारत की जो विकास यात्रा है और उसमें एक ये अहम बिंदु होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। चूंकि हम बताना चाहेंगे आपको, प्रतिबिंब ज्यादातर जिन सांसदों से बात हुई, मैंने पूछा कि किस कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें भारत का फोकस रहने वाला है, जिसमें बजट का फोकस होना चाहिए या हो सकता है। तो मैं आपको उन कुछ सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे ज्यादा सांसदों ने कहा कि डिफेंस के जो क्षेत्र में है, जिस तरीके से हमारा इंपोर्ट, जो कि हम लगभग पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर थे, अब वो इंपोर्ट कम हुआ है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम सेक्टर जो बात हुई, सांसदों ने कहा कि जिस तरीके से कोविड के दौरान हमने देखा कि वैक्सीन मैत्री के बारे में, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको लेकर इस बजट में काफी और आगे किया जा सकता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अगर उसका देखें तो भारत बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि यूएनजीए ने एक ऑफिशियल तरीके से भारत का शुक्रिया कहा था इस कोविड काल के दौरान, और भारत ने कई देशों को
वैक्सीन पहुंचाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा ब्राजील के प्रधानमंत्री ने तो हनुमान जी की संजीवनी लाते हुए तस्वीर पोस्ट कर भारत का शुक्रिया किया था। तो ऐसे में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है और जाहिर है कि कृषि को लेकर खासतौर पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ज्यादातर आप जानते हैं कि सांसद जो क्षेत्र से आते हैं तो रूरल डेवलपमेंट को लेकर और कृषि को लेकर खास तौर पर लोग सांसदों की अपेक्षाएं हैं कि इस बार और ज्यादा बेहतर होगा। हम बीते बजट में देखते रहे कि सरकार का कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान रहा है, लेकिन इस बार चूंकि ये चुनाव से पहले कहें आखिरी बजट है, इसके बाद अंतरिम बजट होगा, तो सरकार कोशिश भी करेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है और ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र पर फोकस किया जाए। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर है जैसे कि हमारे अभी पैनलिस्ट बात कर रही थी कि तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कल ही कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा। तो ऐसे में जब ग्लोबल ग्रोथ रेट कम रहेगा तो उसका भारत पर ये असर तो पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ चुनौतियां हैं भारत के सामने। और हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार जो कि सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और चूंकि इस सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कल जो बातें कही अपने अभिभाषण में और सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो कि सबका साथ सबका विकास की भावना से ओतप्रोत था और अंतिम आदमी तक विकास जो है वो पहुंचाने का लक्ष्य हमने पिछले कार्यकाल में देखा है इस सरकार के। अब जो चुनौतियां हैं मैडम, हम देख रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियां किस तरीके की हैं, स्लो डाउन है और जो अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक स्तर पर और जो महामारी के दौर से हम गुजरे और अब चूंकि अर्थव्यवस्था जो है हालांकि पटरी पर लौटी है, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री भी कहने से अब और बूस्ट देना है, इसको पटरी से पर दौड़ाना है। तो किन चुनौतियों के साथ कितनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और इस बजट में किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हम कोविड महामारी के दौर से निकले हैं और अब जो है हमने काफी रिकवर कर लिया है। और कल हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि रिकवरी जो है अब कंप्लीट हो गई है, पूरी हो चुकी है और अब हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ाना है, उस गाड़ी को और तेज दौड़ाना है। तो ऐसी आशा की जा रही है कि जो अभी तक किया गया है नीतियों में, उन नीतियों को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको और बूस्ट देने की बातचीत है। निवेश को कैसे और आसान किया जा सकता है, कैसे और बढ़ाया जा सकता है, निजी क्षेत्र के निवेश को कैसे, विदेशी निवेश को और बढ़ाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल कृषि क्षेत्र को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि वो पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके। और जैसा कि आपने भी कहा कि अभी वैश्विक स्तर पे बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पे एक मंदी का दौर चल रहा है, खासतौर पे वो जो मार्केट्स हैं हमारे निर्यात क्षेत्र के लिए, उनमें तो निर्यात क्षेत्र को भी थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत होगी। तो ऐसी आशा की जाती है कि इस क्षेत्र के लिए भी शायद सरकार कुछ करेगी इस बजट में। और ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए और निवेश के सपोर्ट के लिए जो पीएलआई स्कीम्स आई हैं उनको और आगे शायद बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्रों के लिए पीएलआई लाई जा सकती हैं। पीएलआई के लिए एलोकेशन जो है, पैसा जो है और शायद उनको दिया जा सकता है। तो इन सारे क्षेत्रों के लिए कुछ मेजर्स जो हैं ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि आएंगे ताकि ये ग्रोथ जो है इसको और बूस्ट दिया जा सके। जी जी, और मोनिका अलान भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मोनिका जी, यहाँ पर बात की जा रही है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बड़ी है और शायद उसी का नतीजा है कि हमारा निर्यात भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात को और बढ़ाना, निवेश को जो है लेकर आना, ये दो बड़े लक्ष्य हैं इस सरकार के। तो क्या माना जाए इन लक्ष्यों को कहीं ना कहीं टारगेट करता हुआ ये वित्त बजट होने वाला है इस बार का? कि इसमें चुनौतियां बहुत सारी हैं, पर जो निर्यात है उस पे शायद हम लोग बजट के थ्रू कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका और मोनिका जी की आवाज थोड़ी कम है। हम बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं थोड़ी देर पूर्व की तस्वीरें हैं, जब वित्त मंत्री पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनसे अनुमति प्राप्त करने के लिए, वित्त बजट पेश करने के लिए। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जो साझा की जा रही हैं संसद टीवी पर।
बिल्कुल, थोड़ी देर पहले चूंकि मुलाकात हुई है वित्त मंत्री की राष्ट्रपति से, और ये तस्वीरें भी अपने हाथ में ऐतिहासिक हैं। देश की राष्ट्रपति महिला, और उनका पहला बजट सत्र ये, जिसको उन्होंने कल संबोधित किया, और वित्त मंत्री जो कि अपना लगातार 5वां जो बजट है, आम बजट, देश की उम्मीदों, जनता की आकांक्षाओं का बजट आज वो पेश करने वाली हैं। तो ये मुलाकात इनकी हो चुकी है और 11 बजे का इंतजार है हम सभी को, जब जो बजट का पिटारा है वो खुलेगा और मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जो हैं वो देश को बताएंगी कि उनकी उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर रहा है। जी हाँ, मोनिका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मोनिका जी, जो सवाल मैंने पूछा था कितना अहम है, क्या इन दोनों बिंदुओं को कहीं ना कहीं टारगेट करता हुआ होगा इस बार का वित्त बजट? जैसे मैं कह रही थी कि निर्यात के ऊपर शायद बजट का कुछ असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप रिसेशन में चले जाते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा। पर मेरा जो मानना है, इसको, इस निर्यात की बात को छोड़ के एक ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ये प्री इलेक्शन बजट होगा और फ्रीबीज दी जाएंगी। जितना मैंने इस सरकार को समझा है जी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कदम उठाएंगी वित्त मंत्री जिससे जितनी मुश्किल से जो बजट है वो काबू में आया है। जो बजट के ऑफ बजट आइटम्स थे पिछले 2 बजट में, उनको ऑन बजट लिया गया है। जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, अब वो नंबर का कुछ मायना है, क्योंकि पहले वो छुपाया जाता था। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है बजट काबू में आया है और मुझे नहीं बजट लगता कैसा होगा उसका रिफ्लेक्शन अभी से नजर आने लगा है, देके शेयर मार्केट में नजर आने लगा है मोनिका जी। और अभी तक जो खबर है 437 अंक ऊपर है, ऐसे नहीं होगा। बाजार की अगर बात करें तो 437 अंक ऊपर है। और राजीव कपूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव कपूर जी, ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं उसका मुझे लगता है सिर्फ उसी के ऊपर एक पटरी बन गई है, उसके ऊपर ही फोकस है। ये नहीं कि अब इस साल ऐसे करते हैं, अब दूसरे साल वैसे करते हैं। और इसका जो फायदा होता है वो एक, जब मोमेंटम बन जाता है, रफ्तार बन जाती है, और फिर जब इकोनॉमी चलने लगती है, तो जो फायदा जो सैलरीड है, जो मांगते हैं, जो कुछ रखते हैं एक्सपेक्टेशन बजट से, मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि 1 आध साल का संयम और है। एक बार जब ग्रोथ निकल पड़ती है इकोनॉमी में, तो जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट्स, अपॉर्चुनिटी सब बढ़ती हैं। जो 91 की जनरेशन है, जो उस साल उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी थी, अगले 10 साल में काया पलट हो गई थी, क्योंकि रिफॉर्म्स तब हुए थे। पिछले 5-6 साल में जो रिफॉर्म हुए हैं, बजट की तरफ ना देखे सैलरीड क्लास, ये देखे कि जो ग्रोथ इकोनॉमी में आएगी अब, उसकी वजह से जो फायदा होगा वो कहीं ज्यादा होगा 10,000 इधर और 5,000 उधर मिलने से। मुझे यही लगता है कि इसी डायरेक्शन में अगर हम चलते रहेंगे तो शायद भारत एक अकेला देश होगा अगले कुछ सालों में जिनका जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 6-6.5 की, वो कामयाब बिल्कुल रहेगी। मोनिका जी, उम्मीद भी इसी की जताई जा रही है, और जैसा कि प्रतिबिंब ने अभी बताया भी कि इसका असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स जो है 437 अंक के उछाल के साथ ऊपर चढ़ गया है। और राजीव जी जो कि जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव कपूर जो कि एमडी हैं स्टील बर्ड हेलमेट्स के। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चर्चा में आपको शामिल करना चाहेंगे, और ये जो उछाल है, सेंसेक्स का जो उत्साह है, उसे किस नजरिए से देखें? ऐसे जब भी बजट आता है तो सबकी उम्मीदें बहुत होती हैं कि बजट बहुत रंग लाएगा, और मोदी सरकार के जितने भी बजट आए हैं आज तक वो सब रंग लाए हैं। ये इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा बजट होगा, इसलिए उछाल तो मस्ट ही है जी। और जहां तक हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सब्सिडी और जरूर देनी चाहिए इनकम टैक्स में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। लोगों के हाथ में अगर अच्छा कैश आएगा तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, वो और खर्चा करेंगे, तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मिलेंगी थ्रू जीएसटी। अगर वो कुछ भी खरीदते हैं तो जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी, दैट इज वेरी गुड। दूसरा, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब तो सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो उससे जीएसटी कलेक्शंस बहुत बढ़ रही हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि हमें बहुत जॉब्स क्रिएट करनी है। हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, उसके लिए सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, मैं कहता हूं जो 1000 वर्कर्स रखते हैं,
गवर्नमेंट को उनको सब्सिडी देनी चाहिए। जो 2000 वर्कर्स रखते हैं अपनी एक कंपनी में, उनको और सब्सिडीज देनी चाहिए, ताकि लोग मैन पावर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मैन पावर के प्रति जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियों पे 28% जीएसटी है, जिसमें मैन पावर बहुत लगती है, उस पर जीएसटी की दर गवर्नमेंट को घटा देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोज हम 1000 एम्प्लॉय रखते हैं अपनी कंपनी में, तो ईएसआई, पीएफ गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे दे, कुछ सब्सिडी दे, ताकि लोग, अभी सब लोग ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहे हैं जी, ठीक है, वो बहुत जरूरी है ऑटोमेशन करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, बट अगर हम 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर हम उनको काम देंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो हमें जो भी हमारे लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। जी जी अजय जी, यहाँ पर एक बात सामने आई है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और भी बढ़ाने का प्रयास संभवतः नजर आएगा इस बार के बजट में। लेकिन अगर निर्यात की बात की जाए तो वैश्विक परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और वैश्विक परिदृश्य कहीं ना कहीं नकारात्मक नजर आ रहा है। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए? चुनौती तो अवश्य है, लेकिन मैं मानता हूँ जब विदेशी बाजार में थोड़ी मंदी आती है, ताकतवर देशों में से जो तो हमारे जैसे देशों को एक अवसर मिलता है सस्ती बाजार में ज्यादा स्थान। एक बार अपडेट कर देता हूं मैं अपने दर्शकों को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई थी, उनसे अनुमति प्राप्त करने गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है इस देश का, और उनसे अनुमति वित्त बजट पेश करने के लिए मांगने गई थी। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और संसद टीवी पर साझा कर रहे हैं हम सबसे पहले, और लगातार विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ संभावित है इस बार के वित्त बजट को लेकर। जी अजय जी। बात यह है कि इस पर चर्चा कम होती है, तो लगा हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का तो एक्सचेंज रेट बहुत गिरा है, हमारा कम गिरा है, लेकिन रियल एक्सचेंज रेट जो है उसको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की आवश्यकता है कि उससे दोनों जगह फायदा होता है। जो हमारे यहाँ आयात होता है, जो बाजार में विदेशी माल हम खरीदते हैं, उसकी जगह हमारे देश में बना हुआ माल हम खरीदेंगे, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा कर सकेंगे। तो एक्सचेंज रेट पर चर्चा थोड़ी कम होती है, बजट का समय नहीं है उस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन वो एक अहम विषय है जिस पर कि इससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है निर्यात पर और देश के उत्पादन पर। बिल्कुल सर, जैसे कि प्रतिम ने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, और इन सबके का जो एक बेस है, दीपशिखा जी मैं आपको चर्चा में शामिल कर रही हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, हमने देखा कि सरकार के दोनों ही कार्यकाल में इस पर खासा फोकस रहा, और इसका जिक्र कल राष्ट्रपति जी ने किया भी अपने अभिभाषण के दौरान। किस तरीके से, चाहे वो नेटवर्क बिछाना हो मेट्रो का, या फिर देश की 99% बसों को सड़क मार्ग से जोड़ना हो, या फिर सड़कों का जाल बिछाना हो, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर रहा है। इस बजट में इसको और गति मिलने की, और बूस्ट मिलने की उम्मीद है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा है। हमने देखा कि सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आई थी, जिसमें 9000 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गति शक्ति की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर हम चाहते हैं कि निवेश आए, उद्योग जगत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले, उनके लिए कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो, उसके लिए आधारभूत ढांचे में सुधार होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा आम आदमी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे उसकी जिंदगी जो है आसान हो। जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पिछले बजट में भी देखा था कि एक बहुत बढ़ोतरी की गई थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। इस साल भी, इस बार के बजट में भी ऐसी उम्मीद है कि इसको और बढ़ाया जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और पुश किया जाए। हमने देखा है कि रेलवे, हाईवेज जो है, रेलवे में स्टेशन रीडेवलपमेंट, ट्रैक्स को बढ़ाने की बात है, नई ट्रेन्स लाने की बात है। तो रेलवे में भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत पुश रहेगा, और हाईवेज में तो बहुत काम हो ही रहा है, तो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। और उसके अलावा जो रैपिड रेल नेटवर्क है, जो बड़े बड़े शहर हैं या छोटे भी शहर हैं, उनमें भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो आधारभूत ढांचे में सुधार एक बहुत बड़ा फोकस है इस सरकार की। जी जी, राहुल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं सचुम से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत ही ज्यादा सरगर्मियां चल रही हैं इस वक्त संसद भवन के प्रांगण में भी, और वित्त मंत्री मिल चुकी हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से मिलने के बाद कैबिनेट की अनुमति प्राप्त करेंगी तकरीबन 10:15 बजे। क्या जो अभिभाषण में कल कहा राष्ट्रपति ने, 9 बरस का भी लेखा जोखा उसमें दिया गया, और उसमें ये बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को और मजबूत करने की कोशिश क्या इस बजट के द्वारा की जाएगी, या फिर लोक लुभावना रखने का प्रयास इस सरकार का होगा, क्योंकि ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा इस सरकार का? जी राहुल जी। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारी आवाज, आपकी आवाज हल्की आ रही थी। जी जी, हम ये कह रहे थे कि 9 साल में सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इस आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने का प्रयास ही होगा क्या इस बजट में, और इस प्रयास में क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं? राहुल जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रतिबिंब, लेकिन हम हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट जुड़े हैं, अजय जी, चूंकि इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, राहुल जी से बात नहीं हो पाई, उनसे हम ये आगे सवाल करते कितनी उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को। सरकार का फोकस रहा है, हमने देखा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर भी, चाहे वो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था देना हो, लेकिन इस बार हम क्या देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में इस बूस्ट को और भी ज्यादा तेज करने के मूड में है गवर्नमेंट? सरकार की तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम सफल हों। तो पीएलआई स्कीम के फल हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार हम मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, इसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम कुछ और क्षेत्रों की ओर और एक्सपेंड होगी। जी जी, और कहाँ जाएगी वो देखने की बात है, लेकिन मैं चाहूंगा या उम्मीद करूंगा कि जहां रोजगार का सृजन ज्यादा हो वहां भी ये स्कीम जाए। जी जी, अगर और एक और चीज जिसकी हम उम्मीद करेंगे, जिसका आपने भी जिक्र किया था, कि सरकार अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अब अगले कदम की ओर जाए और सोचना शुरू करे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हम कैसे कम करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा तभी निजी निवेश होगा, रोजगार मिलेगा। और एक और जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है करीब 100 बिलियन का हो गया है जी, और हमारा पूरा व्यापार 2-3 बिलियन का होता था, और जो भी आता है वो माल हमारे देश में पहले बनता था, आज भी बनता है, बन सकता है। तो कहीं हम उम्मीद करेंगे बजट में और बजट के बाद भी कि एक ठोस प्रयास हो कि चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तेजी से कम हो, और जितनी तेजी से कम होगा हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दो विषय यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण सामने आए हैं। एक तो व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, और दूसरा निर्यात भी, निर्यात के नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। और नए क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो रक्षा से जुड़े हुए जो निर्माण है उनमें न केवल तेजी हुई है बल्कि उनका निर्यात भी बढ़ा है। कितना महत्वपूर्ण? बहुत ज्यादा। डिफेंस जो है हमने देखा है कि, और ये सरकार ने एक बहुत सारी नीतियां में बदलाव किया था, एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई थी, उसके अलावा जो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया था, और पूरा इकोसिस्टम जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का देश में खड़ा करने की बात है, ताकि उनके एंसिलरीज भी आए और ताकि रोजगार बढ़े, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, और निवेश की विदेशी निवेश भी हो, और उसके अलावा देश जो है एक एक्सपोर्ट हब की तरह उभरे डिफेंस के क्षेत्र में भी। तो ऐसी आशा की डिफेंस के लिए पीएलआई की भी बातचीत है। तो ये जो फोकस एरियाज हैं, ये इस बार इस बजट में भी डिफेंस जो है उसमें, और डिफेंस ही नहीं, पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से और इनकरेज किया जा सकता है, इसके ऊपर बजट में जरूर कुछ मेजर्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मिस्टर राहुल गर्ग हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, किसी तकनीकी खामी से उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन वो जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं नेशनल काउंसिल ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, एसोचैम।
सर एक बार फिर से आपका स्वागत है और सवाल आपसे ये कि 7 करोड़ से ज्यादा टैक्स चुकाने वाले जो जनता है वो बजट का तीसरा बड़ा चेहरा है और सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से करीब 15 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। डायरेक्ट टैक्स को लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं, इसमें क्या कुछ गुंजाइश नजर आ रही है इस बजट में? अभी तो फोन तो पेश है, अभी हो जाएगा सर। जी राहुल जी। हाँ कहिए। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2014 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला और लोगों की उम्मीदें इस बार हैं। हाँ। किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं इसको लेकर? राहुल जी, आप तक आवाज मिल रही है? 2014 के बाद से जो बजट के मोमेंटम और बजट की डायरेक्शन है जी, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। राहुल जी, आप जारी रखें। वो आप सुन नहीं, साफ है, आपकी आवाज साफ आ रही है। जी जी जी, जारी रखें। आपने सुन नहीं पा रहे हो हमको। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से भेंट कर चुकी हैं। कह रहे थे कि 2014 से जो बजट की डायरेक्शन चली है जी जी कंटिन्यू कीजिए आप राहुल जी, आवाज साफ है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2014 से जो बजट की डायरेक्शन है, ग्रोथ और सपोर्ट टू आम पब्लिक, वो कंटिन्यू रहेगी। और इस बजट में स्पेशली हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन, जिससे कि आम आदमी और जनता को काफी परेशानी होती है, उसको कंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली काफी प्रयत्न नजर आएंगे। और जहां तक टैक्स का सवाल है, टैक्स का कलेक्शन पिछले साल अच्छा, इस साल अच्छा रहा और उसकी वजह से थोड़ा सा फिस्कल स्पेस ज्यादा मिलता है ग्रोथ के इंसेंटिव्स के लिए और वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो हमको ये उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का चलता रहेगा और डिमांड जिस तरीके से बढ़ पा रही है और इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, उससे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कम करने की वजह से आम जनता को काफी रिलीफ मिलेगा बजट के कुल प्राविधानों से। और टैक्स के बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि टैक्स ऊपर नीचे करने से सिर्फ 6 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है और इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होने से 140 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट का फोकस जरूर इस बात पे रहेगा कि हम इन्फ्लेशन को कम रखें, टैक्स रेट, इंडिविजुअल के टैक्स रेट भी रीजनेबल है। हो सकता है जो लोअर मिडिल क्लास है उसको थोड़ा टैक्स का रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना पिछले दिनों बढ़ा रहा उससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। ये मुझे उम्मीद है बजट से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की जाएगी, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को टैक्स में कुछ रिलीफ दी जा सकती है ताकि उनका इन्फ्लेशन का बर्डन फॉर द ईयर थोड़ा कम हो जाए। जी जी, ऋचा गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, आपने सुनी बातें, कहीं ना कहीं बातें ये आ रही है कि थोड़ा सा मध्य वर्ग को छूट दी जा सकती है। पिछले 9 बरस में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए सबकी मध्य वर्ग की अपेक्षा भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक मोटा सवाल जो है वो इंडस्ट्री के सामने आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, लेकिन अगर विश्व परिदृश्य ऐसा ही बना रहेगा तो निर्यात हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चुनौती रहेगी। तो क्या जो हमारा आंतरिक बाजार है उसको मजबूत करने की दिशा में भी सरकार को कोई बड़ा कदम इस बार के बजट में उठाना चाहिए?
जी, देखिए, ये तो जनरल जो अभी एक डिस्कशन हो रहा है, जो हम बातें कर रहे हैं, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि सरकार जो है वो चैलेंजेस को लेके काफी अवेयर है। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सारे पॉइंट्स काफी अच्छे से डिस्कस थे। दो तीन बातें और जो है जिसपे जो सरकार के लिए सोचने वाली है कि अब जो हमारा इन्फ्लेशन का जो हमारा सिनेरियो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन ग्लोबली डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उनके भी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। तो डोमेस्टिक लेवल पर हम प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगे, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेंगे। आरबीआई ने बहुत ही अच्छे से इसमें कोऑपरेट किया। रेट हाइक्स टाइमली हुए, आगे भी रेट हाइक्स जो है वो आरबीआई अब क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है, आरबीआई भी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है, तो दे विल सी कि वो किस तरह से अपने रेट हाइक को आगे जाके मैनेज करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि रेट हाइक्स जो है अब क्रेडिट सप्लाई पे ज्यादा इम्पैक्ट ना करें, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंट आउट किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस समय डीलेवरेज्ड है। जी, बैंक्स हैं वो फुली कैपिटलाइज्ड है, दे आर गियर्ड अप, वो गियर्ड अप है लोन देने के लिए। तो आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन को मैनेज करना, ग्रोथ को मैनेज करना, दोनों के लिए अपने रेट हाइक्स मैनेज करना है। जी, जहां तक हम बात कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट की, इंटरनल मार्केट की, वहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक होती हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अभी भी हमको अपनी लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर अब जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस होगा, ऐसी एक उम्मीद है। क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ने से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, हम सिर्फ सड़कों की या ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिससे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कंट्री में मोबाइल नेटवर्क स्प्रेड होने से, डिजिटल कनेक्टिविटी स्प्रेड होने से कितना सारा इकोनॉमिक वैल्यू एट द कंज्यूमर लेवल अनलॉक हुआ है। और हमारी ग्रोथ का जो प्राइमरी रीजन है वो है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन। बिल्कुल। सो उस सबको मैनेज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद ये है कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फोकस है वो अब लास्ट माइल। आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders
who had fought for India's independence, will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat Mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven
and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power,
and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme,
but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents.
A national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana
is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity.
Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land, and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission, as well as existing schemes, to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states, and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced, and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out
This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, phase 3 of e-courts projects phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a
new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Gobardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Gobardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster-based plants
at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized.
The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers, including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation
as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option.
Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates
helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars, and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials
for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I'm providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I'm providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups.
Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime
with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I'm also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. Item number 1, माननीय
आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में,
जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Namaskar viewers, hello and welcome to this special coverage on Sansad TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitaraman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kal, Finance Minister Nirmala Sitaraman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future. The government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the Finance Minister laid the roadmap for future growth and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kal: inclusive development, reaching the last mile, infra and investment, also unleashing the huge potential of India, green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitaraman has announced, and also some tax reliefs that she just announced in the second part of her speech. So with an eminent panel of experts today, we will decode all of these post-budget analysis, the announcements that the Finance Minister has made, Harsh. जी बिल्कुल टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज निर्मला सीतारमन ने आज अपने बजट प्रपोजल्स में रखे हैं, ये 7 प्रायोरिटीज बिल्कुल उस सप्तऋषि की तरह काम करेंगे। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि सप्तऋषि है और वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ये सारी चीजें का जो विकास होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 7 प्रायोरिटीज क्या क्या हैं जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं AKB, जिन्हें हम कहते हैं, AK भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, और आम आदमी को कहें कि जिस चीज का बड़ी ही बेसब्री से किसी भी बजट में इंतजार रहता है, खासकर हम कहते हैं वेतन भोगियों के लिए, कान लगाकर सुनते रहते हैं। और वित्त मंत्री के पार्ट बी में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने ये तोहफा दे ही दिया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो 7 लाख का जो तोहफा है वो तो जरूर है, और उसके साथ मैं समझता हूं कि सुधार की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो सुधार की दृष्टिकोण से टैक्स व्यवस्था में जो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिजीम का जो सुधार का जो उन्होंने ऐलान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। क्योंकि जो 2020 में जो एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसमें कोई एग्जेम्पशंस की कोई न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कि जो लोगों ने उसको ज्यादा सराहना नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत एक्सेप्टेंस कम था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ऐलान किया गया है वो एक ऐसा एक अनाउंसमेंट है जिससे कि लोग अब ये नए टैक्स रिजीम में आ सकते हैं, थोड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे। और वित्त मंत्री का भी कहना है कि ये डिफॉल्ट रिजीम बन गया है अब, तो सरकार का भी इसमें पूरी तरह से उसका सपोर्ट है। पर अगर मैं इस बजट में ऑब्वियसली इसकी जो हेडलाइन जो होंगी आम आदमी के लिए, ये जिसकी आपने जिक्र की, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस बजट को अगर हमें पूरी तरह से उसको समझना है, इसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी मैं समझता हूँ कि एक तरफ है वित्तीय अनुशासन, दूसरी तरफ है टैक्स रेजीम का सुधार, और तीसरा और ये है कि उस वित्तीय अनुशासन के अंदर रहते हुए भी जो कैपेक्स में जो 33% का जो इजाफा जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ ये 3 चीज
जो है हमें एक साथ देखना पड़ेगा। और चौथी चीज जो है, आपने जो कहा कि जो टैक्स रिलीफ का है, तो चारों जो स्तंभ जो हैं इस बजट के, उसको हमें पूरी बिल्कुल। तरह से समझना होगा और पूरी तरह से इसका ऐलान कर, मतलब पूरी तरह से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात मैं कह दूं कि जो टैक्स कलेक्शंस की जो प्रोजेक्शंस की गई हैं, वो सिर्फ 11-11.5% वृद्धि की कही गई है। तो मैं समझता हूँ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो जो निर्मला सीतारमन जी का जो बजट पिछले 2 साल का बजट हमने देखा है, उस बजट में जो एक अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी का जो एक समन्वय था, वो अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं। आमतौर पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ना कि आमतौर पे प्रोजेक्शन बहुत ऊपर होता है और एक्चुअल जब डिलीवरी होती थी तो बहुत नीचे होती थी। हमने 2014 से पहले में देखा तरह से होगा। उन्होंने जो वित्तीय जो घाटा का जो ऐलान किया इस साल का, उन्होंने 6.4% का ही दिखाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्योंकि वो इजीली वो उन्होंने जो खर्चे की जो उसके ऊपर जो रोक लगाई है और कैपेक्स को तभी बढ़ाया है उन्होंने। मैं समझता हूँ ये एक प्रैग्मेटिज्म है और स्टेट्स को उन्होंने इस बार मैं समझता हूँ कि और भी थोड़ी बहुत छूट दी है। सरचार्ज की घटाना स्टेट को भागीदार बनाया। हाँ, स्टेट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान जो होगा सरचार्ज को घटाने से, जो एकदम जो हाई एंड जो HNI इंडिविजुअल जो हैं, उनका 42.7 से 39% में ले जाना, ये अपने सेंटर ने अपना हिट लिया है। ये तो स्टेट्स को उतना हिट नहीं होगा। अशोक, इसको माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे टीना, लेकिन इन्होंने जो अशोक ने खास बात बताई वो ये है, अगर हम देखें जो 7 सप्तऋषियों की बात आप कह रही थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि निर्मला जी ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अमृतकाल का पहला बजट है, पहली सीढ़ी है। हमें अगले 25 साल जाना है, जब भारत 2047 में आजाद भारत 100 वर्ष का हो जाएगा, उसकी प्रथम सीढ़ी है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 33% उसमें इजाफा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाते हुए अब इसे 13.7 लाख करोड़ किया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो सरकार की अभी प्राथमिकताओं में एक है, बल्कि हर दिशा में विकास होगा। और जो सरकार का कहना है कि समावेशी विकास हो और हम अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बढ़ेगा। We'll continue, and Mr. Bhattacharya, I'll come back to you. But in the meanwhile, let me also introduce another guest who's joining us in the studio, Professor Charan Singh, CEO, IGRO Foundation. Before we proceed and discuss, analyze each of these aspects, the 7 key priorities that the finance minister had laid across, Professor, your first remarks on the budget. Do you see the finance minister building up on the reforms that this government has done over the years, or it's a more forward-looking, capitalizing and sort of laying a roadmap for India at 100? Absolutely, it's an excellent budget. This is amazing how she has achieved it. The first and foremost thing, as I look as an economic professor, is growth, and this is growth oriented, and that is reflecting from her figures directly. If the gross fiscal deficit is coming down from 6.4% to 5.9%, it is obvious that there is tax collection is high, tax buoyancy is there, and growth is being recorded. If I look at the sectoral analysis that she has presented today, she has taken care of the employment, she has taken care of women. Female labor force participation in the country is very low. She is using the self-help groups to increase that, increase entrepreneurship amongst the women. She has taken care of the youth. She has spoken about the startups. I think this is an amazing budget. And the most important thing when you talk about growth-oriented budget is the tax slabs. And she has taken care of the personal income tax too. So my first reaction is this is a budget which will take care of the industry because of infrastructure. It will take care of individuals, entrepreneurship, because the tax slabs are low now. She has given concessions even to the senior citizens. So that means the banking sector will also benefit. In any growth model, they'll tell you 2 things, finance and employment. On the finance, she has again spoken about the financial sector. India, as it is a very stable financial stability is very high, but she has spoken about the financial sector, and she says they're going to revisit the banking and the non-banking and the RBI Act
and look at how they can strengthen the financial system. So to me, my overall reaction would be this budget gets 11 out of 10. Okay, Professor, the fact that, when we talk about inclusive growth and the prominent role going forth of women and youth particularly. So what are the new initiatives that the finance minister has sort of, laid out to increase the participation of not just more and more women, but also to capitalize on the advantage of demographic dividend for India? Yeah, exactly. The startup incentives that she's given, even in the tax slabs, that she has said that if you're doing entrepreneurship, I'm going to enhance from 7 to 10 years. There's a tax benefit there. I think that's amazing. Now, quite a bit of youth get employed, self-employment. And on the self-employment too, she has given concessions there. On MSMEs, she is announcing concessions. So this is where I think the youth is going to get engaged actively into the whole system. There has been emphasis on digital thing. And please remember, the youth are far more comfortable with the digital world. And therein also, I see lots of things happening there. On the skilling, again, she has emphasized a lot on how skilling is going to get enhanced across the spectrum. I think that is going to help again the youth. So to me, female labor force participation and the youth, which taps the demographic dividend of the country, is rightly placed by the effort. बिल्कुल। और अशोक, हम आगे बढ़ते हैं, इस पे थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। बहुत ही सही तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी टैकल करने की बात वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में कही है, जिससे कि ना आपका ग्रोथ अफेक्टेड हो, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे असर पड़े, और सारी चीजों को एक तरीके से हम बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपने बात की, जो उसमें हमने ये देखा है कि जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है, उसका पूरा हमें एहसास मिला है कि 6.4% कहा गया है, तो 6.4% में रुकेंगे हम, और अगले साल में 4.5% को देखते हुए, और पार्लियामेंट की सदन के पटल में उन्होंने पूरा एक ऐलान किया है कि वो 4.5% के ऊपर वो पूरी तरह से वो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान है, और उन्होंने स्टेट्स को भी उसी तरह से एक एश्योरेंस दिया है कि आप भी अपना खर्चा बढ़ाइए। 0.5% जो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है 3.5%, वो लिंक्ड रहेगी किस तरह से आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म लिंक्ड जो एलोकेशंस जो हैं स्टेट्स के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंडिकेशन है। और हम कहना चाहेंगे कि आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर अब 5 कर दी गई है। इसे और सुविधाजनक बनाया गया है। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स। अगर आपकी कमाई 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच है तो आपको 10% की दर से टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स, और 15 लाख से अगर ज्यादा आपकी आमदनी है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। इसे लगातार हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और ये टैक्स स्लैब को 6 से 5 भी किया गया है। एक तरीके से मैं देख रहा हूं डॉक्टर चरण सिंह की हर तरीके से ईज ऑफ डूइंग थिंग्स की एक व्यवस्था की जा रही है। आप देखें कि टैक्स फॉर्म को भी बदला गया है, जो एक बहुत झंझट लगता था, कितने क्लिक्स दबाएं, कहां जाएं, कैसे जाएं। अब वो सारी चीजें, ये भारत के लिए न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, बट इससे पहले कि प्रोफेसर इस सवाल का जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या कहा, ताकि वो दर्शक जिन्होंने बजट प्रेजेंटेशन मिस कर दिया हो, आइए सुनते हैं कि उन्होंने टैक्स रिलीफ किस तरह से दिया है, और जिसका सीधा फायदा हजारों, इनफैक्ट लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को होगा, जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आइए सुनते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs
will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. Yes, Professor. So one thing is very clear. Firstly, the slabs have been reduced. That makes life easier. Secondly, the tax rates have become multiples of 5 and 10. Very, very easy to compute. Yes. Some of us have been arguing this for a very long time. Direct taxes, indirect taxes, GST. Why can't you think in terms of the last man in the village shop? And he knows, okay, 5%, 10%, 15, 20, and my job is done. So firstly, the slabs getting reduced, the multiples of 5 and 10 coming in, very easy to understand. If you have noticed, even on the presumptive tax, she has done a great job. So to a great extent, now MSMEs and professionals don't have to worry about the tax slab at all. Presumptive tax देने से सबको लाभ हो गया. तो मुझे लगता है कि जो अच्छा उसके ऊपर द पीक टैक्स रेट जो 42.5% था उसको रिड्यूस किया एंड 37 से 25% किया. उससे भी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5. तो मुझे लग रहा है कि जो आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग. तो जो टैक्स से एक डर लगता था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, किस परसेंट, वो सब नहीं रहा. सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया. स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर ये मेरी इनकम है 5% या 10% या 15% से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट होता है. आमतौर पर लोग डरते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो गया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है. टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं, टैक्स देते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादातर आगे ज्यादा बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है इस टाइम पे सरकार ने यही चीज मन में रखी है कि टैक्स स्लैब्स को कम करके सिंप्लीफाई करके. वैसे वित्त मंत्री जी ने उस टाइम पे ये भी बीच में अपनी भाषण स्पीच में कहा कि किस तरीके से हम लोग 90 डेज से 16 डेज तक ले आए हैं प्रोसेसिंग, और कुछ तो हम लोग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं. तो उससे टैक्स पेयर को भी एक विश्वास बन जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम. अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती है. मैंने खुद कैलकुलेट किया है और अभी मुझे 24 घंटों में या कम से कम 15 दिन में पता लग जाएगा कि मेरा टैक्स सबमिशन ठीक रहा है कि नहीं. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल I think has been simplified. Okay, a related question, Mr. Bhattacharya, I'll take from you, because now the new tax regime becomes the default system. Is it still possible to avail the benefits of the old tax regime? Has the finance minister made that clear also? The indication that I got from will get a clear answer, but the indication is that the government will treat the new tax regime as the default regime, but the old regime does not go away. But if you compare the tax rates and the slabs under the new regime, you will see that every slab, income slab, has got a benefit under the alternative tax regime. So there will be natural migration of people from the exemptions regime to the non-exemption regime. So I think it has been very carefully drafted. The flaws in the original scheme of 2020 has been addressed very largely, and as the finance minister rightly said, that if somebody is drawing an annual income, taxable income of 9 lakh, earlier system, that person would have had to pay a tax of around 60,000 in a year. Now 45,000. Similarly, in the case of 12 to 15, anybody who's earning 15 lakh, he or she had to pay around 1.5 lakh, but now it is only 1.07 lakh.
So the gains are there. So there will be natural, attraction and migration to the scheme. So I see this also very intelligently done, because you are trying to make the scheme more attractive for those who are at the lower end of the spectrum, in the income spectrum. Now, there are two reasons why I call it intelligent. One is that the government's revenue hit will be relatively less, because as you know that almost 70% of the government's individual income tax collections are coming from the top 30%. Right. Yes. And so the lower one is more. So the government's revenue hits less relatively. And second, this is the segment. This is the segment which was worst hit during the pandemic and things. So therefore, this also can be treated as a kind of a demand push and a kind of a fiscal stimulus of sorts, so that the people will have at least 45,000 rupees extra in a year, and that can hopefully will help revive demand in an economy that really needs a demand push. Sure. And I have no doubts that the new regime will now become the default regime for everyone, because it's so easy to do. और अब चलते हैं अपने संवाददाता नव विक्रम सिंह के पास। नव विक्रम सिंह सुबह से ही संसद भवन में और वित्त मंत्रालय में बजट को फॉलो कर रहे हैं। नव विक्रम, यस नव विक्रम, आपसे तो पहले आप जानते हैं कि बिहार से सांसद हैं, और इस समय एग्रीकल्चर को लेकर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर को लेकर जो तमाम सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जो खाका खींचा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वर्तमान बजट के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। देश के किसानों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, मध्यम वर्ग परिवारों को तरफ से, नौकरी करने वालों की तरफ से, और खासतौर पे कृषि की जब आपने बात कही, तो सचमुच में ये पिछला 3 साल का जो कोरोना काल था, तो पूरी दुनिया नष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था। आज हम लोग भी कष्ट में थे, मगर उसके बावजूद अगर देश को संभाला है और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, तो वही और नहीं अन्नदाता किसानी है, कृषक ही है। उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, अद्भुत है। और किसानों के हित के लिए, मछुआरों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए कई योजना, कई कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था, उसमें जान देने का काम किया है, उसमें और मजबूती प्रदान करने का काम किया। विपक्ष का जो कहना है कि बजट एक तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं उसी को बढ़ाया गया, विपक्ष आपके इस तर्क से सहमत नहीं है? देखिए, मैं विपक्ष को तो कभी हम लोग सहमत नहीं करवा सकते, क्योंकि विपक्ष का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हर चीज में उनको नकारात्मक चीज समझ में आता है। ये बात सही है कि हमारा जो योजना है, पिछले 9 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है, 8 साल से 9 साल से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में जो उनका विजन है, उसी के वजह से देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के नेतृत्व करने योग्य हो गया है। और देश, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े देशों की व्यवस्था खराब हो गई, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी इसी विजन के कारण, पुराने नए कार्यक्रमों के वजह से देश जहां तरक्की कर रहा है, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर प्राप्त कर ली है। आने वाले दिन में ही इसको हम और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही सकारात्मक है, देश हित के लिए है और सबके हित के लिए है। कोई वर्ग, कोई तबका नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है, जिसके आशा लगाए बहुत पहले से थे, 5 लाख तक का जो स्लैब था बढ़ के 7 लाख हो गया। अब 7 लाख रुपए तक कमाई करिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर्ष जी, जो रामकृपाल जी ने बताया कि ये खास तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और खास वो लोग जो लोग की अभी टैक्स के दायरे को लेकर खास तौर पर नजर थी, उनके लिए बेहतर है, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत शानदार नवक्रम, आपने रामकृपाल यादव जी के साथ कृषि और आम जनता का ये किस तरीके से बजट है,
बहुत शानदार चीज करी। In fact, और we will continue to take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working as associate professor at the Center for WTO IIFT, is also joining us. Professor Sharma, delighted to have you with us on Sunset TV. Your first comments on the budget. The BJP MP you just heard described it as forward-looking, inclusive growth. How would you describe the union budget for 2023-24? Yeah, thank you. This is excellent budget, and how to effectively implement Sabka Saath, Sabka Vikas, and especially with the agriculture, the government has focused on many things. Especially the one of the important thing is the infrastructure, because that is the most important thing. And if you see the if you see the progress from the past sport program schemes, there are excellent programs were implemented by the government of India and the PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These type of programs have helped in increasing the income of the farmers. The one important aspect for the farmer income and for the welfare is that it is well known that many of the farmers in India, farmers are small and marginal farmers with land holding size very, very low. Now these farmers, they face multiple challenges in terms of the credit, in terms of lower land holding size. Right. So keeping in this mind, the budget has given the sufficient funds and also implement various specific programs to increase the income of the farmers. Like if you see for the cotton farmers, they have implemented this very good scheme. Then for the fisheries sector, as well as agriculture infrastructure fund, which is playing very important role, and encouraging new young people to come to the agriculture through by bringing new technology in the agriculture sector. These are helping a lot. And furthermore, the fund which is also allocated to Ministry of Corporation, like in the previous budgets, the government has initiated the Farmer Producer Organization, FPO. Now, one of the challenge for the small farmers is that they used to buy inputs from the retail, and they used to also sell in the wholesale market. Now, with the FPO, with this collective bargaining, they can buy in bulk so that their input cost will reduce, and they will able to bargain better and can sell their products in the domestic as well as the international market. And that's how if you see that lot of FPO and many of the farmers are now exporting their agriculture products. Right. Mr. Pradeep Goyal, his chairman, Asset Reconstruction Council of the ASSOCHAM, is also joining us on the program. Mr. Goyal, thank you very much for joining us on Sunset TV. Your first response to the union budget? कोई बात नहीं अशोक, आपके अखबार में मार्केट हैज चीयर्ड अप, और मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन देख सकता हूँ द सेंसेक्स has surged almost more than 1,200 points और ये 60,745 पर कर रहा है. निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच 1800 मार्क्स. क्या हेडलाइन होगी आपकी? हेडलाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसका कारण बहुत साफ है. दो तीन जो अनाउंसमेंट हुए, पीएम आवास योजना में 66% की इंक्रीज की गई है. वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और स्पेशली इन द रूरल इंडिया, इसमें बोथ फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर कंपनीज गेटिंग बिजनेसेस इन दिस पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा एक भारी होगा. दूसरी बात, रेलवेज आउटले, कैपेक्स आउटले इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट 2.4 लाख करोड़. तीसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 33%. चौथी बात है जो कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके रेट्स 33 से 13 ला गए हैं. तो ये बहुत बड़ा एक इससे सरकार ने ज्यादा रेवेन्यू उसमें प्रपोज नहीं किया. मैं देख रहा था कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं, पर उसमें लगता है कि रिफॉर्म का जो सुगंध मुझे मिल रहा है, ये एक अच्छी खबर है. और फाइनल मैं जो कहूंगा कि जो इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गया है वो मैं समझता हूं वो डिमांड के लिए काफी लाभदायक. लोगों की जेब में अशोक पैसे आएंगे
इस बार ज्यादा आएंगे। और जो हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से डोमेस्टिक